Welcome viewers, and I feel very privileged and it is my pleasure to introduce the speaker of today's discussion, Mr. Mohammed Arif Aajakia. He is well-known personality world over. He is known for his very forward, broad-minded looks and views. He very candidly expresses himself without mincing words. He is known for plain speak and very kind of approach which is may not be to the liking of a few people, but then generally I know world over his views are well respected. And today he is going to discuss on a subject which is very close to not only Indians but everyone who are citizen of countries which not many years back part of India. I'm talking about countries which are today independent countries, but have umbilical uh, kind of relationship with India. Grand alliance of Indian continent, will it be a reality? Is it a possibility? This is the subject we are going to discuss today. Mr. Aajakia is born in Karachi in 1964. His full name is Mr. Mohammed Arif Aajakia. He is an avid human rights activist and have been working to inform world over about the violations of human and minority rights in Pakistan, especially. And very proudly and candidly, he says, I am French citizen for 25 years, Pakistani since 72 years, and Indian since 1,000 years. That is how he proudly proclaims himself as Sanatani. The term Greater India is a reference to Indian cultural sphere, which was popularized in 1920. It is an umbrella term encompassing the Indian subcontinent and surrounding countries, which are culturally linked through a diverse cultural climate. These countries, though, have been transformed to varying degrees by the acceptance and induction of cultural and institutional elements from each other, yet they share great amount of commonalities so far as history, literature, and culture is concerned. We will discuss with our esteemed speaker the possibilities of all such countries joining together as a confederation of countries of Indian origin. The discussion is conducted by Patriots Forum, which is devoted to preservation and promotion of ancient Indian culture against emerging threats to its survival from prevalent religious demographic imbalances. The Patriots Forum strives to protect an Indian identity and culture and work to instill sense of patriotism and nation building in youth. We are apolitical and support all initiatives aimed at national building and character building, promoting and strengthening Indian Sanatan culture. Uh, Once again, Mr. Aajakia, it is my proud privilege to welcome you. And uh, to start with, I would like your views. You have expressed very candidly that how you wish you remain part of Indian ethos, culture, and civilization. You have very recently been to, sorry for the disturbance, you have recently been to India and search for your background, your ancient heritage, and how do you feel about the concept of Akhand Bharat or forum which would be joining all the countries of Indian origin? Your views now. First of all, thank you very much, Captain Saab. Namaskar to everyone. Jai Akhand Bharat. Now, coming to the subject and my views on Indian heritage and my belonging to Indian heritage, is that it's the oldest civilization, it's the richest civilization, it is the
most correct civilization. There were so many old civilizations like Greek civilization, Inca, Maya, Egyptian, so many, all disappeared. But today we see 100 crores Indians, Bharatiya. It shows that despite having attacked from all over the world, invasions from Abrahamic religions, it still stands a majority Hindu state. Muslims and Christians, wherever they went, they converted entire country into their religion. Before 1400 years, there was not a single Muslim in the world. But since invasion, entire Saudi Arabia, entire Arab world became Muslim. Indonesia, Malaysia, North Africa, so many countries, Turkey, and Christians, they went to mainland Africa, South America, USA, Australia, Canada, and they became Christian countries. But India, somehow, the current geographical boundaries of India, we have 100 crores, and we have so many crores in throughout the world. Indian civilization went from east to west. Today we see Indians in West Indies. They were there since centuries. We see in Fiji Island, we see in Southeast Asia, we see in Southern Africa, Eastern Africa, everywhere. They have maintained their civilization. Now, talking about Akhand Bharat, our very celebrity, son of an invader, Saif Ali Khan, he said a few months back that idea of India came only under British. Before British, there was no idea of India. Now I have so many arguments to negate him. Like the Muslims, they propagate hadith of Prophet Muhammad that there will be a Ghazwa Hind, and then Muslim armies will conquer India, and so and so. My point is that Ghazwa Hind in Arabic, India is called Hind. How come for 1400 years back there was a concept of India? Then we have Mahabharat, thousands of year old. What is this Bharat? This, isn't it India? I agree that there were so many small states within India, independent states. There were Rajya, there was Maharaja Dahir of Sindh, and so on. Even when British left, there were 500 plus princely states of India. So I agree that there were small states of India, but they were all under the confederation of one India. What British did, that when they left, before leaving, they knew that if we leave India intact in one country, which was British India, then it would conquer every civilization in the world, every religion in the world because of its correctness and its richness. They will wipe off everyone and it will become a superpower. So, why should we leave one India? So, systematically, India was partitioned, not in 47, well before 47. As Burma, today we call it Myanmar, became an independent state, separated from India. Sri Lanka, which was called Ceylon, became an independent state, separated from India. Nepal, Bhutan, and then India, and, Pakistan, and Bangladesh. So, if we see the map of India, which is behind me, India's head was cut, India's legs were cut, India's right and left wings were cut. This was Akhand Bharat. Even Akhand Bharat was broader than this.
Afghanistan was ruled by Indians. Even thousands of years old scriptures and idols are found in Afghanistan. Thailand was ruled by India. Southeast Asia in Chola dynasty, Indonesia, Malaysia, all these were ruled by India. So the concept of Akhand Bharat is very wide. But today we see that in Pakistan, Bangladesh still exists Indian culture, Indian religion, Sanatani religion, and Indian origin. Though Muslims of India, Pakistan, and Bangladesh, they deny their belonging to India, their DNA of India, but they cannot change it. They cannot change the fact that they are Indian. Their DNA is Indian. Their ancestors were Hindus. And I take it a pride in my belonging. It was not very long ago that I always took pride in that because I did not know about it. My ignorance was at that level that when I was a young student in Pakistan, we are always taught distorted histories. In Pakistan, we are looking for our illegitimate fathers in Arabs, in Turks, and now in Chinese. We never accept that we are Indians. Our origin is Indian. Our ancestral religion was Sanatan. When I was a young student, when I was reading the distorted history taught in Pakistan, I used to say that Mahmud Ghaznavi was such a wonderful hero of Islam, and he conquered India and this and that, and Somnath was attacked 17 times. And but when I came out of Pakistan at the age of 20, and since then I'm living abroad, I got a chance to study independent history, especially in Europe. Because when I left Pakistan, I went to Saudi Arabia, Dubai. Again, there was no chance of an independent history. So I, when in Europe, started studying history, and I realized one day when I was reading about Somnath and about the attacks of Mahmud Ghaznavi and Ghoris there, and I was shocked. I was ashamed that whom I am calling my hero. Because my ancestral village, which I visited last in February when I was in India, Ajak in Saurashtra, Gujarat, I realized that Ajak is hardly 50 kilometers from Somnath. And suddenly I said that when Mahmud Ghaznavi used to come, he did not attack only Somnath. He ruined entire Sindh, Punjab, and then entered Gujarat. And when entering Gujarat, he ruined every village, including my ancestral village. And I started viewing the events of 1000-year old, that what was happening there. And I saw that Mahmud Ghaznavi attacked my village, enslaved my village children, sex slaved my women, killed my ancestors, burnt the fields of my village, and sold the women of my ancestors in the bazaars of Baghdad, Ghazni, Damascus. And I was shocked that such an ignorance, and I could not forgive Pakistan authorities for giving me this kind of education. And since then, Somnath became my ideal. I started thinking that this was the mandir which was my ancestors' mandir. My ancestors used to do puja there, and Mahmud Ghaznavi destroyed it. So I committed to myself that whenever in my life I will get a chance, I will bow down on Somnath
and ask forgiveness from Somnath, which I did. The next day of my visit to my ancestral village, I went to Somnath and I begged for forgiveness from Shivji there. So since then, I started believing that I'm not a Pakistani. Pakistan is an artificial country created by superpowers with some intentions. If I am Pakistani because I was born there, but I lived there for 20 years only, I'll be 58 this month and next month, May. And out of 50 years, 8 years of my life, 20 years I lived in Pakistan. Since 32 years, I'm living in Europe. I have adopted French citizenships in 1996. So it's 26 years. So why I'm not French? So I started thinking deeply and I said that no, I'm neither French, I may be French national, I'm neither Pakistani, I may be Pakistan born national, I'm Indian. And my belonging, my DNA is Indian because thousands of years belonging to Indian of my ancestors makes me Indian. I don't ask Indian government to give me nationality. I don't need nationality to love India. I don't need nationality to feel proud of my Dharti Ma. There are hundreds of thousands of Indians who are Indian nationals, but they work against Indian country, Indian heritage, Indian philosophy. So it's not important to get a nationality to love India. Now, again, after my own introduction of being an Indian origin, I come to Akhand Bharat. I explained that British they cut India into many pieces. What else they did, which I knew because I read these reports a few years back. But our honorable foreign minister, Shri Jaishankarji, mentioned last week in his interview that British stole away $45 trillion from India. Now think about it. It's not billion, trillion. Pakistan's total debt is under 200 billion, and Pakistan is enslaved by Chinese and American financial institutes like World Bank and IMF. Only 200 billion. Just to give you an example that how big the amount $45 trillion is. America's war in Afghanistan, 32 years, 42 years war, cost America only $2 trillion. So now, and it is today's $2 trillion. Think about 200 years or 100 years back, $45 trillion siphoned out of India. And on that $45 trillion, England is surviving even today. England is not a big economy because they have something to sell. They have nothing. But they are big economy because they looted from entire world during colonial powers. But the jewel of British crown was India. Uh, all over the world they ruled. But they could not loot that money from entire world that they looted only in India. Because India was a rich country. And India is a rich country, even today. If we had some good government since 1947, I'm not a voter of BJP. I cannot vote in Indian politics. I cannot campaign. I'm not a member of BJP. But I like their politics. They have brought a big change. The biggest change is that today we are discussing an issue which was not possible before 10 years. They have allowed us freedom to study and adopt our ideas. They have brought awareness among own people. They have brought pride among Indians. Indians were not never so proud of their heritage that they are today. We had a very rich heritage.
The Abrahamic faiths, they conquered entire world, and they were not correct human beings in a sense that after getting victory in a war, they enslaved people of defeated armies. They sex slaved women of defeated armies, which is very low, which is subhuman. In India, also, different Raje, they fought wars against each other. There is not a single example that a Raja defeated another Raja and he sex slaved their women. He gave total respect to the women of defeated armies and gave them freedom to live their lives. This is big difference. This shows that how noble and how respectful is our Sanatan ideology. Because it is because of Sanatan ideology that we maintained morals during the war also. While in Christianity and Islam, the first thing after getting victory, what they used to do was to divide women among them, women of defeated army, defeated countries, even civilians. And this happened regularly. So I think that Akhand Bharat was the best country in the world. I proudly always say Jai Shri Ram. Why do I say Jai Shri Ram? I was asked many times this question from Muslims. I said literally, Jai Shri Ram means Ramji Zindabad. I said, you say Imran Khan Zindabad, a characterless, womanizer, drugs addict. Imran Khan Zindabad is okay for you. While for me, Shri Ram was the best ruler in the history of mankind. During his rule, everyone was equal. Every human being, every Indian enjoyed equal rights. There were no atrocities, neither by state nor by common people, powerful people, which we see even today. Chaudhries and Jagirdars and Sarpanch and ministers, and they do atrocities even today. But at that time, it was the best Rajya in the history of mankind. So why cannot I say Jai Shri Ram? So India, Akhand Bharat was really a wonderful state in the world. तो Now today आरिफ we जी, are divided. जी Yes, sir. आरिफ जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आज हम अखंड भारत का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहें, तो पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस अखंड भारत का हिस्सा थे, और शायद उनमें वहाँ के नागरिकों में, जो वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, उनके मन में भी इच्छा हो कि चलिए हम भी उस ग्रेट हेरिटेज कल्चर का हिस्सा बन जाएं, जिससे उनको भी एक स्वाभिमान वाली बात और एक ये आदर उनका बढ़ जाता है, ऐसी भावना भी बढ़ जाती है। तो मैं जैसे बताऊं, नेपाल गया, मैं चाइना गया, मैं म्यांमार भी गया और बांग्लादेश भी गया हूँ, पाकिस्तान नहीं गया, और ऐसी कोई खैर मेरी इच्छा भी नहीं थी उधर जाने की। तो मैंने एक ये फीलिंग तो देखी है कि जब आप बताते हैं कि आप भारत से आए हैं, तो एक तो उनके आंखों में जो चमक है और व्यवहार में जो बदलाव है, वो पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात ये कि उनके मन में भी मैंने जो जहाँ कुरेदने की कोशिश की, उनसे बात करके उनकी मन की बात जानने की कोशिश की, तो ये लगा कि किसी तरीके से एक उनका जुड़ाव तो है, मानसिक रूप से, इमोशनल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर वो कनेक्ट फील करते हैं। लेकिन अब ये जो बात आती है, वो सिर्फ सिटीजन्स के सोचने की बात नहीं है, जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होगी। तो बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा, म्यांमार होगा, श्रीलंका होगा, थाईलैंड है, बाली मैंने देखा कि हर घर के आगे इवन
कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, होटल्स में भी मैंने हिंदू मंदिर देखे हैं। तो एक इच्छा तो जरूर है कि ऐसे जुड़े। तो ये क्या ऐसा होगा कॉन्सेप्ट, हम सोच सकते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन का है कि वो अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए भी एक कॉमन थ्रेड है उनका जो आपस में कनेक्ट करता है। क्या ऐसे कॉन्सेप्ट को हम सोच सकते हैं? देखें, वैसे तो देखने में ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है, लॉजिकली ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन एक बड़ा इशू है, वो ये है कि जब इस्लाम आता है किसी के पास, तो इस्लाम आपसे अपनी आपकी बाकी आइडेंटिटी छीन लेता है। एक मुसलमान से आप जाके पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं पहले मुसलमान हूं, फिर पाकिस्तानी हूं, फिर पठान हूं। इसी तरह बांग्लादेश के मुसलमान से कहेंगे तो वो कहेगा मैं पहले मुसलमान हूं, फिर बांग्लादेशी हूं, फिर बंगाली एथनिसिटी है मेरी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे भारत में चूंकि सनातन इज ए वेरी फ्री फ्लोइंग फिलोसॉफी, तो भारत में किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा मैं पहले मराठी हूं, फिर इंडियन हूं, फिर हिंदू हूं, या मैं पहले तमिल हूं, फिर इंडियन हूं, फिर हिंदू हूं। तो मुसलमान को वापस इंडिया की तरफ लाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट समटाइम्स मैं ये बैठ के सोचता हूं कि ये अच्छा ही नहीं हुआ कि भारत का डिवीजन हुआ। कि आज आप देखें, भारत में आपसे 200 मिलियन मुसलमान नहीं संभाले जाते। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के 450 मिलियन मुसलमान और 200 मिलियन इंडिया के मुसलमान, 650 मिलियन इंडिया के अंदर मुसलमान होते तो 200 मिलियन ने 1947 से आपकी एजुकेशन पे, आपकी हेरिटेज पे, आपके रिसोर्सेज पे कब्जा किया हुआ था। सोचे 650 मिलियन होते तो एक तो कन्वर्जन रेट कितना तेजी से ऊपर जाता, और हो सकता है कि आज हिंदू माइनॉरिटी में होते, मुसलमान मेजोरिटी में होते। तो आप इतने मुसलमानों को संभालोगे तो इंडियन हेरिटेज, इंडियन उसको आप खतरे में डाल देंगे। तो अखंड भारत लगता नहीं है पॉसिबल। इसकी वजह यह है कि 650 मिलियन मुसलमानों को आप कैसे उस आइडियोलॉजी से निकालेंगे जिसने सख्ती से जकड़ा हुआ है। देखें, 1400 साल पहले जब इस्लाम आया था ना, तो इस्लाम में उस वक्त ट्राइबल सोसाइटी थी सऊदी अरब में, तो छोटे छोटे ट्राइब्स थे। तो ट्राइब्स अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था, कोई ये सब चीजें नहीं होती थी, तो उसके लिए इन्होंने 5 वक्त की नमाज का कॉन्सेप्ट किया, ताकि मस्जिद में हर आदमी आएगा, मौलवी काउंटिंग रखेगा कि हाँ भाई सारे आए हैं। आरिफ अजाकिया नमाज पढ़ने नहीं आया, हो सकता है बीमार है। दूसरी नमाज पढ़ने नहीं आया, असर की नमाज पढ़ने नहीं आया। अब 2 आदमी जाएंगे चेक करने के लिए, आरिफ भाई आपकी तबीयत ठीक है? पता चला आरिफ भाई घर में नहीं, तो फिर वो कि कोई गद्दारी हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई कुछ हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट था नमाज का, बड़ा जकड़ा हुआ है। इस्लाम इज एन इम्पोजिंग आइडियोलॉजी। ऐसे में आप अखंड भारत के लिए कैसे इनको कन्विंस करेंगे? आप शायद सेम कल्चर, सेम रिलीजन की बुनियाद पे नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश, श्रीलंका को तो आप कन्विंस कर लेंगे। आप अफगानिस्तान के पठानों को, जो वेरी स्ट्रिक्ट मुसलमान हैं, कैसे कन्विंस करेंगे टू बिकम ए कॉन्फेडरेशन? आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग और दुनिया में कई बेवकूफ मुसलमान खिलाफत की बात करते हैं। इवन इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट चली थी 30s में और 20s में, और उसमें इवन गांधी जी ने भी वो किया था। तो खिलाफत मूवमेंट इज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स। तो मुसलमान देशों को आप खिलाफत के लिए तो कन्विंस कर सकेंगे। आज आपको मैं बताऊं कि खिलाफत का ऐलान करें, 90% पाकिस्तानी एग्री हो जाएंगे मुसलमान, और 100% इंडियन मुसलमान एग्री हो जाएंगे खिलाफत पे। तो उनको पता है कि खिलाफत का मतलब मुसलमान खलीफा रूल करेगा, हमारी इन हिंदुत्ववादियों से जान छूट जाएगी। तो खिलाफत के कन्फेडरेशन के लिए तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। इंडियन कन्फेडरेशन के लिए द थिंग्स लुक वेरी फार, बट आप इसको वो भी नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा। हो सकता है कि जिस स्पीड से इंडियन नेशनलिज्म प्रमोट हो रहा है, इंडियन नेशनलिज्म आगे बढ़ रहा है, हो सकता है आज से 25 साल बाद इंडिया दुनिया की सुपर पावर हो,
जैसे अमेरिका आज का यूनाइटेड स्टेट्स एक दिन में तो नहीं बना था, शुरू में तो 4-5 स्टेट मिलके बनी थी यूनाइटेड स्टेट्स। आहिस्ते आहिस्ते अमेरिका प्रॉस्पेरिटी, अमेरिका की स्ट्रेंथ ने बाकी स्टेट्स को मजबूत किया। आज 50+ स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसी तरह आज से 70 साल पहले कोई सोच सकता था, 80 साल पहले जब जंग अजीम चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, कि सोच सकता था कोई कि जर्मनी और फ्रांस सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे? एक यूरोपियन यूनियन होगा जो कि यूरोप पूरा जंग में एक दूसरे से लड़ रहा था। तो यू नेवर नो कि सनातन आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि मे बी यू पुल बैक पीपल। अब मैं जैसे वापस अपनी रूट्स की तरफ आया हूं, लेकिन मेरे जैसे कितने लोग अभी हैं? बहुत कम है, ना होने के बराबर है। हम लोग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि अंदरूनी तौर पे पाकिस्तानी, आज आप बॉर्डर खोल दें इंडिया पाकिस्तान का, और आप इंडिया के मुसलमानों को कहें कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, और पाकिस्तान के मतलब जितने इंडियन है जाना चाहें पाकिस्तान जाएं, जितने पाकिस्तानी इंडिया आना चाहे इंडिया आए, आपको मैं गारंटी देता हूं कि पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, सारे पाकिस्तानी आ जाएंगे। लेकिन एक भी इंडियन, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, एक भी इंडियन पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं होगा। तो भारत में अट्रैक्शन तो है, जरा बॉर्डर खुलते हैं तो राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, तो सारे सिंगर इधर आ जाते हैं, आधी आईपीएल पाकिस्तानी हो जाती है। तो भारत इनको पसंद बहुत है, लेकिन अगर आप इनको ये कहें कि आप इंडियन ओरिजिन की तरफ आए, तो ये पता नहीं क्यों शर्माते हैं अपनी ओरिजिन से, अच्छा जबकि आरिफ भाई, रिचेस्ट। मैं ये अपने ही दोस्तों में मैं चर्चा कर रहा था कि एक ये कॉन्सेप्ट की तरह से मैं डिस्कस करना चाह रहा था, और मैंने बताया कि आरिफ भाई आएंगे आज डिस्कशन में। तो मेरे जो बहुत ही करीबी दोस्त थे उन्होंने कहा कि आप अगर ये डिस्कशन कर रहे हो तो आइदर यू आर ब्लडी फूल, और उन्होंने ऐसे ही बोला, या ये वो तुम उतने दूर का देख सकते हो जो भविष्य दृष्टा हो, फॉर्चून टेलर हो, क्योंकि आज की तारीख में ये संभव लगता नहीं है। लेकिन मैं कुछ इंडिकेशन देख रहा था, दे आर ना एज स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, मैं ये देखता हूँ कि आपका समाज कुछ फ्लैग रेज करता है, कुछ इंडिकेटर एक सोसाइटी में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और तब ये लगता है कि ये समाज चेंज करने के लिए तैयार है। पहली बात तो ये कि अब से 5 साल, तकरीबन 5 साल पहले, नेशनलिस्ट होना एक गाली की तरह से माना जाता था। हिटलर के जमाने में नेशनलिज्म को ऐसा बर्बाद और बदनाम कर दिया, इस शब्द का अर्थ ही बदल दिया, कि जब हम नेशनलिज्म की बात करते थे या नेशनलिस्ट होने की बात करते थे, तो ऐसा लगता था कि हम जैसे देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। आज लोग, बड़े बड़े लोग जो समाज में बड़ी इज्जत पाते हैं, वो कहते हैं कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, और बड़े प्राउड फीलिंग के साथ वो कहते हैं कि मैं नेशनलिस्ट हूँ। तो एक तो ये चेंज आ रहा है। दूसरा ये कि एक आम आदमी में ये कॉन्फिडेंस हो गया, जो एक सुपर पावर बनते हुए एक कंट्री के सिटीजन्स को होना चाहिए। आप आए हैं भारत में, और आपने ये फील भी किया होगा कि हर इंसान, अनपढ़ हो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, इंसान बहुत ही अमीर हो या गरीब हो, उनका एक एटीट्यूड है और उनका एक ओपिनियन है, और ये ओपिनियन पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद डिस्कशन में कुछ ऐसा निकले कि आगे हमें उम्मीद बने। तो मैं अगली बात जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि आपने बड़े कैंडिडेटली कह दिया कि बॉर्डर अगर खोलेंगे या यूरोपियन यूनियन का ये कॉन्सेप्ट है, उस मॉडल पर हम काम करेंगे, तो बहुत कुछ इंडिया को गंवाना पड़ेगा, हासिल कुछ नहीं होगा शायद। लेकिन धीरे धीरे जब हम ये सोचेंगे तो मुझे ये लगता है, और आप अपना कमेंट इसके बारे में जरूर बताएं, कि एक कल्चरल लेवल पर, हेरिटेज के लेवल पर एक अम्बिलिकल कॉर्ड इन कंट्रीज की अभी भी एक जुड़ाव, मानसिक रूप से भावना के लेवल पर जुड़ाव है। तो हम उसको कैपिटलाइज करके कम से कम एशिया में तो और भी ज्यादा पॉजिटिविटी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि
मैं यहाँ मुसलमान की बात नहीं कर रहा। आपने बड़ा क्लियर बोला कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है तो नेशनहुड का कॉन्सेप्ट नहीं है, और दूसरा ये कि इस्लाम को मानने वाला किसी दूसरे को बराबर भी नहीं मानता, अपने से बड़ा तो मानता नहीं है, बराबर भी नहीं मानता। ये मैं कुरान की स्टडी करके बता रहा हूँ, मैंने हिंदी में इंग्लिश में पढ़ी है, हो सकता है मेरा गलत हो बात। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या हम कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, आर्ट्स, लिटरेचर, इस एलिमेंट को हम और ज़्यादा डेवलप करके एक आपस में कनेक्ट और पॉजिटिव डायलॉग तो बना जिससे कि माहौल बने, ऐसा पॉसिबल है क्या? मसला ये है कि ये बात तो एक्टेबल है कि भारत की जो सनातन कल्चर है वो वेरी स्ट्रांग है और वो दूसरों को अपने तौर पे अपनी तरफ खींचती है। इसकी मैं मिसाल ये दूंगा कि आप इस्लाम के जितने रिचुअल्स उठा लें, ये सारे तो सनातन से लिए गए हैं। भाई इस्लाम 1400 से पहले आप से बढ़ 1400 हज कराया आप नेम इट भी कर आपने आपके यहाँ तस्बीह होती है, आपके यहाँ रुद्राक्षा होती है, हमारे यहाँ तस्बीह होती है। आपके यहाँ ज़कात दी जाती, हमारे यहाँ ज़कात दी जाती है, आपके यहाँ दान दिया जाता है। मतलब आप 7 चक्कर जो अल्लाह के घर का मक्का में काटते हैं, तो ये हिंदुओं में हजारों साल से हो रहा है। हर चीज तो वहां से लिए, तो सनातन इज ए रिच कल्चर, आई एग्री का। लेकिन आपके यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, वो सिक्युलर हिंदूज है, वो बड़ा इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि वो मुझे नहीं पता था। एक ऑपरेशन टू से मोदी जी की विक्ट्री हुई 2019 में, और फिर मोदी जी ने ताबड़तोड़ हमले किए, आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन किया, राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ। तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज, स्पेशली पाकिस्तान चाइना बैक्ड जो लेफ्ट एंड लिबरल वो हैं, वो इनमें हलचल मच गई। तो एक ऑपरेशन टुपाक शुरू किया गया। ये अभी रिपोर्ट रिलीज हुई है, 111 पेज की रिपोर्ट रिलीज हुई है मेरे पास, मैंने कल ही इसको पढ़ा है और मैं इस पे वीडियो भी बना रहा हूं। तो ऑपरेशन टुपाक का मकसद ये था कि इंडिया के अंदर हलचल मचाई जाए। और आप इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को लेंगे तो सबसे पहले आपको याद होगा लास्ट ईयर सितंबर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ग्लोबल हिंदुत्व, अमेरिका में, जिसमें कई यूनिवर्सिटियों ने हिस्सा लिया था। फिर आप देखें फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान टूल किट का जिक्र आया। फिर अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमेटी फॉर रिलीजियस फ्रीडम, यूएसईआरएफ, उसकी रिपोर्ट आई कि इंडिया शुड बी बैंड, इंडिया शुड बी हैव एम्बार्गो बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन इन इंडिया, वगैरह वगैरह। ऐसे कई वाकयात आपको बताऊंगा। फिर रिहाना ट्वीट कर रही है, मियाँ खलीफा ट्वीट कर रही है, इल्हान उमर अमेरिकी कांग्रेस में तकरीर कर रही है, यहाँ पे लेबर पार्टी रोज कश्मीर पे, भारत के मुसलमानों पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच कर रही है। इवन कल एक पाकिस्तानी ओरिजिन की ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जॉनसन हमारे प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया कि तुम जिस ट्रैक्टर में इंडिया में जाके बैठे थे वो ट्रैक्टर मुसलमानों के घर तोड़ रहा है, तुमने क्या मोदी से सवाल किया? तुम तो बैठ कर उस ट्रैक्टर की पब्लिसिटी कर रहे थे। इस तरह की चीजें एक ऑर्गेनाइज तरीके से एंटी इंडिया मूवमेंट चली है, जिसमें सबसे बड़ा बदकिस्मती से किरदार कौन अदा कर रहा है? आपका भारत का कुछ मीडिया सेक्शन, जो कि इसको बढ़ावे दे रहा है। इसकी मिसाल यूं दूंगा कि आर्टिकल 370 का ऑब्लिगेशन हुआ तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान बैक्ड और चाइना बैक्ड एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया है, कश्मीर में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंटरनेट बंद और ये और वो। तो कुछ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने कश्मीर का दौरा किया, भारत आए, कश्मीर का दौरा किया, और वहां पे डल लेक में
कश्ती में बैठ के घूमे फिरे, बाजारों में घूमे और बताया कि देखो ये कश्मीर तो खुला डुल्ला पड़ा है, यहाँ पे तो कोई कर्फ्यू नहीं। तो आपके राजदीप सरदेसाई ने ब्रेकिंग प्रोग्राम किए कि ये मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को एक इंडियन एनजीओ ने स्पॉन्सर किया है और ये तो इंडिया की सरकार ने इनको बुलाया है। आप मुझे ये बताएं कि लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, पता नहीं कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं इंडिया में। कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने ये कहा हो कि ये आईएसआई बैक्ड है? कभी आपने किसी एंटी पाकिस्तान के हवाले से किसी चीज में क्या ये महसूस किया हो कि पाकिस्तान के लेकिन भारत की ये बदकिस्मती है भाई, एनजीओ लाया है, एनजीओ ने स्पॉन्सर किया है। दुनिया में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने बल पे नहीं जाता, कोई ना कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। अगर एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, मकसद क्या था लाने का यूरोपियन में पार्लियामेंट के मेंबर्स को? दिखाना कि भाई कश्मीर खुला पड़ा है, जिसका आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन आपके जर्नलिस्टों ने उसको डाइल्यूट करना शुरू किया, तो ये किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं? पाकिस्तान का। तो सर आप जो बात कह रहे हैं ना कि जो रिचनेस ऑफ कल्चर है या वो, तो बड़ा मुश्किल होगा आप इन एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोगों को। अब मैं इस ऑपरेशन टुपाक के हवाले से आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं तमाम भारतीयों से एक विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि देखें ये भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है। अमेरिका के कांग्रेसमैन भी शामिल हैं इसमें, सेनेटर्स भी शामिल हैं, यूरोप की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स के मेंबर शामिल हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, कनाडा पूरा शामिल है, आपको पता ही है। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपनी यूनिटी को खराब ना करें, चाहे आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, उसको घर पे रखें अपने धर्म को। आप इंडियन बने, इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करें, आप अपने आप को इंडियन बना के रखें। ये देश है तो आप हैं, ये आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान है कि आप इंडियन हैं। इस इंडियन होने की वजह से आज पूरी दुनिया में इंडियंस की इज्जत है। तो किस साजिश का हिस्सा ना बने। मुसलमान कुछ कम्युनल लीडर्स आपके दरमियान तफरीक फैला रहे हैं। भारत में 200 मिलियन मुसलमान है, पथराव के 200 मिलियन थोड़ी कर रहा है, पथराव तो 200 या 2000 कर रहा होगा। दे डोंट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स। इसी तरह हिंदुओं को भी समझना होगा कि वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं एक्सट्रीम की तरफ आने का। तो लेट योर सरकार डू व्हाट इज नेसेसरी टू डू, आप कानून को हाथ में ना लें। ये भारत को कमजोर करने का, क्योंकि भारत एक नई दिशा की तरफ जा रहा है। आज से 10 साल पहले भारत में एक आर्मी का हेलमेट है ना, वो भी बाहर से मंगाया जाता था, बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, वो भी बाहर से मंगाई जाती थी। कैप्टन साहब तो हैं आर्मी के बंदे, उनको पता है। आज हर चीज भारत में बन रही है, सारी डिफेंस प्रोडक्ट्स भारत में बन रही हैं, मेक इन इंडिया प्रोमोट हो रहा है। आप वेस्ट के आगे हाथ जोड़ते थे कि हमें वैक्सीन दे दो भाई, पोलियो की वैक्सीन दे दो, इसकी वैक्सीन दे दो, उसकी। आज आपके यहाँ पेंडेमिक आता है 6 महीने में, तो आप वैक्सीन फेंक देते हो पूरी मार्केट में। वो वक्त जब कोविड के पीक में फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे कि ये कंसाइनमेंट वैक्सीन का मेरा है, ये मेरा है, मुझे जरूरत है, उस वक्त भारत दुनिया में मुफ्त बांट रहा था मिलियंस ऑफ डोजेस। ये नया भारत है, इसकी तेजी रफ्तारी से डर के एक इंटरनेशनल साजिश की जा रही है। आप उसका हिस्सा ना बने, भारत को स्ट्रॉन्ग करें, धर्म को घर में रख के आए। अच्छा आरिफ जी, मैं इनफैक्ट बार बार जब इस तरह की चर्चा आती है तो मैं अपने एक आर्टिकल का जिक्र करता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी मैं फिर से ये शेयर कर रहा हूँ। 2013 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था और वो कुछ वेबसाइट पर मैगजीन में भी छपा, और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट आर्म फोर्सेस का थिंक टैंक है, वहाँ पर वो डिस्कशन हुआ था। और उस आर्टिकल के 3 मैंने प्रोजेक्शन किए थे। दैट फर्स्ट वाज दिस ट्राइपोलर वर्ल्ड will be reduced to bipolar world soon, because at that time uh, it was bipolar America one side, China, and Russia was considered to be third pole. So tripolar world will be reduced to bipolar world in 2020. वो थोड़ा सा ऑफ द टारगेट है, लेकिन
लेकिन तब जो हमारे प्रेसिडेंट थे कलाम साहब, उनका एक विजन था 2000 2020. He wanted and he projected that India will be superpower by 2020. तो सेकंड प्रोजेक्शन ये था कि by 2020 India will not be superpower, but India will be superpower by 2050, provided it avoids civil war in 2020. तो 2020 तो चला गया, 21 चल रहा है, लेकिन 20 में भी अगर हम देखें तो सिविल वार के पूरे सिचुएशन डेवलप हो रही थी। सिचुएशन अभी भी वही चल रही है, गाय बगाए कुछ ऐसा कहीं कहीं हो जाता है कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इमीडिएटली ये सिविल वार हो सकता है। लेकिन अगर हमने सिविल वार को अवॉइड कर लिया तो बाय 2050 माय प्रोजेक्शंस वर दैट अमेरिका विल बी जूनियर पार्टनर विद इंडिया and there will be another side, China. So today we see challenges to Russia, challenges to America, and world equilibrium is shifting today. So today when we see what is happening in Ukraine, Russian conflict, we don't feel very optimistic that we are going to see peace anytime soon. So I request you to make your concluding remark about, again, typical to your candid response. You do not see Akhand Bharat or a common platform like European Union related to countries of Indian origin. Will it remain a concept or it will be part of reality anytime soon? देखें, मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, मेरी विश तो हो सकती है कि देयर इज एन अखंड भारत, और मेरी विश है कि और अगर मुझे अपनी, जैसे मुझसे अगर कोई कहे कि तुम्हारी जान लेके हम अखंड भारत बना लेंगे तो मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये तो मेरी विश हो गई। लेकिन मैं रियलिटी की दुनिया में रहता हूँ, मैं आर्गुमेंट से ही चीज साबित कर सकता हूँ। मुझे खास तौर पे इस्लामिक, आपका अखंड भारत मुस्लिम होगा ना तो रियलिटी है मुसलमानों के लिए, जैसे कि गजवा हिंद है, गजवा हिंद इज एन अखंड भारत, लेकिन वो मुस्लिम इंडिया है। और आज आप ये इनको अगर एक करते हैं तो मैं समझता हूं कि सनातन है ना वेरी सॉफ्ट है, कोएग्जिस्टेंट है। सनातन आपको कोएग्जिस्टेंस की तरफ लाता है, सबको बराबरी की दुनिया बुनियाद पे लाता है। इस्लामिक इज इम्पोजिंग। इस्लाम कहता है मुसलमान सुपीरियर है, बाकी सब नीचे हैं। मुसलमान ऊपर है, जैसे कि भारत में जब इस्लामिक रूल था तो जजिया था और क्या क्या नहीं था गैर मुस्लिमों के लिए। तो जब आप अखंड भारत के लिए या कन्फेडरेशन के लिए एक करेंगे तो मुझे डर है, क्योंकि सनातन तबलीग नहीं करता, कन्वर्जन नहीं करता। इस्लाम तबलीग करता है और वेरी एग्रेसिव तबलीग करता है, लव जिहाद भी करता है, लैंड जिहाद भी करता है, हर जायज नाजायज तरीके से तबलीग करता है, कन्वर्जन करता है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इनको जोड़ेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ भारत के इंटेलेक्चुअल से, आपको पता है मैं इंटरनेशनल फोरास पे 94 से जाता हूं, यूनाइटेड नेशंस हुआ, यूरोपियन पार्लियामेंट हुआ, डिफरेंट थिंक टैंक से राब्ते में रहता हूं। मेरी अक्सर भारत के इंटेलेक्चुअल से मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं तोड़ना चाह रहे। ज्यादातर का यही वो है कि भारत की ख्वाहिश है कि देयर इज ए पीसफुल, प्रोस्पेरस एंड डेवलप पाकिस्तान इन अवर नेबरहुड। लेकिन हम पाकिस्तान तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन उन सब की अखंड भारत के हवाले से यही राय है कि हम तो शुक्र अदा करते हैं कि ये अलग हो गए, वरना अगर ये हमारे साथ होते तो जिस स्पीड से और एग्रेसिवली ये तबलीग करते हैं और जिस स्पीड से ये वो करते हैं, तो हमें डर है कि हमारे जो लिबरल और सेक्युलर हिंदूज हैं वो तेजी से मुसलमान ना हो जाएं। तो मेरी भी अपनी रीडिंग ये है कि बेहतर है कि इनको दूर रख के, अलग रख के, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए जाएं। और उसका हल ये है मेरी नजर में, मैं उन इंटेलेक्चुअल से ये एग्री नहीं करता कि देयर इज ए प्रोस्पेरस, पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इन नेबरहुड इज गुड फॉर इंडिया। नहीं, पाकिस्तान तो आपके सामने है, पाकिस्तान 75 साल से क्या कर रहा है भाई। हमारा
हम अपने बच्चों का पेट काट के जो आर्मी को बजट दे रहे हैं, वो आर्मी पूरा भारत में आतंक फैलाने के लिए लगा रहा है। तो मेरी राय में भारत के मुसलमानों को बनाना है, भारत को फॉरेन एग्रेशन टेररिज्म से बचाना है, आप सिंध और बलूचिस्तान को आजाद करवा दें। ये इंडिजिनियस मूवमेंट है, ये कोई बाहर से इम्पोज की हुई, जैसे कश्मीर में आतंक फैलाया गया वैसा नहीं है। ये सिंधी और बलोच रिसोर्सेज के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने सिंधी बलोचों की जिंदगी हराम की हुई है, घर घर में छापे पड़ते हैं, हजारों लाखों मिसिंग पर्सन्स हैं, डेड लोग हैं, सिविलियंस, अनआर्म्ड। इनको भारत हथियार नहीं देता, इनको भारत मदद नहीं करता, ये बेचारे छोटे छोटे लोकली मेड हथियारों से लड़ रहे हैं अपनी आजादी की। भारत थोड़ी मदद करे, आजाद सिंधु देश, आजाद बलूचिस्तान भारत की कन्फेडरेशन का भी हिस्सा बनेंगे। और ये सेक्युलर सोसाइटीज हैं, पंजाब इनको एक्सट्रीमिस्ट की तरफ ला रहा है, वरना ये सेक्युलर सूफी सोसाइटीज हैं। ये भारत को पसंद भी करते हैं, ये अपनी भारतीय बिलोंगिंग को पसंद भी करते हैं, उस पर फखर भी करते हैं। तो सिंध और बलूचिस्तान को आप आजाद करा देंगे, भारत विल बी आतंक मुक्त। भारत के मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान के बल पे, जो कम्युनल मुसलमान है, मैं सब मुसलमानों को वो नहीं करता, भारत का मेजोरिटी मुसलमान इंडिया पसंद है, लेकिन जो कम्युनल है, जो मुल्ला हैं, जो बढ़ावा देते हैं, वो भी इंसान बन जाएंगे, क्योंकि वो स्लीपर सेल्स हैं जो अभी जगाए गए थे। कहां से ऑपरेट होते हैं? इस्लामाबाद से, जीएचक्यू से ऑपरेट होते हैं। वो खत्म हो जाएगा, इनके पास, आर्मी के पास बजट नहीं होगा, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान से सारा लूटमार होती है। 70% पाकिस्तान को नेशनल एक्सचेकर सिंध देता है, पूरे पाकिस्तान की गैस बलूचिस्तान चलाता है। जब पंजाब के पास ये सब नहीं होगा तो उनकी आर्मी नपुंसक हो जाएगी, वैसे ही नपुंसक है, लेकिन फिर इनके पास कोई बजट नहीं होगा। तो भारत में आतंक बंद हो जाएगा, भारत का मुसलमान फिर इधर नहीं देखेगा पाकिस्तान की तरफ कि हमारा बड़ा भाई बैठा हुआ है, फिर वो भी औकात में आ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अखंड भारत बनाने से पहले जरा आप सिंध और बलूचिस्तान को अलग कर दें, पख्तून ड्यूरन लाइन खत्म करके खुद ही अपने अफगानिस्तान से मिल जाएंगे, बहुत पीस आ जाएगा रीजन में, और फिर आप एक अखंड भारत की तरफ जा सकते हैं। सही। अरे भाई, आपने बड़े कैंडिडली जवाब दिया। और जब मैं इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था, तो मुझे दिखा कि जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर चल रहा हूँ कि सनातन धर्म के अखंड भारत का क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही इस्लामिक अनडिवाइडेड इंडिया का भी कॉन्सेप्ट है। और ये सारा कॉन्सेप्ट अब से नहीं चल रहा है, ये जो चल रहा है वो हमेशा इशारा गजवाए हिंद की तरफ करता है। होमलैंड सिक्योरिटी का प्रोफेशनल होने के नाते मुझे ये मालूम है कि गजवाए हिंद की शुरुआत अब से नहीं हुई। इसके बारे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो कम से कम 18 साल पहले बड़े डिटेल में कॉन्सेप्ट पेपर प्रेजेंट किया था। मुझे याद आता है कि आप अल्ताफ भाई के साथ जब उन्होंने इंडिया में विजिट किया था, आप उनके साथ आए हुए थे। तो सिंधु देश अगेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। सिंधु देश की कल्पना अगर हम करें तो हम ये चाहते हैं कि एक इंटीग्रल पार्ट था। राजा दाहिर हमारे भी पूज्य हैं, जैसे हर सिंधी के पूज्य हैं। और उनकी जो रिच हेरिटेज, कल्चर और इमोशनल कनेक्ट है, वो एक बार में हम कह देते हैं। जब हम कहते हैं कि जय हिंद, तो साथ में मन होता है कि जवाब आए जय सिंध। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस डेवलप होना शुरू हो गया। तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड एट वेरी अप्रोप्रिएट time and on a very relevant subject. I would be requesting once again for coming to the discussion and share your views and thoughts, as rich and as respectable as they have always been. मैं अभी सभी लोगों को, ये अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हालांकि हर सनातन धर्मी अखंड भारत की परिकल्पना से अपने को मानसिक रूप से जुड़ा हुआ पाता है, उसकी इच्छा है और संकल्प भी है कि ऐसा शीघ्र ही हो और समस्त विश्व में भारत अखंड रूप से विश्व गुरु की मान्यता प्राप्त करे। इस अखंड भारत की परिकल्पना के लिए आज हमने चर्चा में
आमंत्रित किया था आरिफ अजाकिया साहब को, और आगे उम्मीद है कि फिर से वो इसी मंच पर परिचर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, और समय ऐसा है जहाँ आप अपना भी ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, समाज को और देश को बेहतर बनाने में हर तरीके से आप अपना योगदान दें। अगले डिस्कशन के लिए नोटिफिकेशन अगर आपके पास आ जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि आप मेंबर हैं, हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं तो आप इस